children, today we are going to start with chapter 4, that is air. So in this chapter we will study about air which is present everywhere and the blanket of air जो हमारी air को surround करता है उसको क्या बोला जाता है? Atmosphere. So air कैसी होती है? It's colorless, odorless and shapeless. So air is a mixture of many gases and particles. Nitrogen की अगर हम बात करें, it is a main constituent and air has about 78% of nitrogen. We have other important gases which are oxygen, carbon dioxide and water vapor. इसके अंदर डस्ट होता है और अदर केमिकल पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी, किसमें? स्मॉल क्वांटिटी में. Right now, need of air. Why do we need air? As you all know, oxygen is the most important gas for us. So we breathe in oxygen. और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. And we cannot live without it. हम ऑक्सीजन के बिना भी नहीं रह सकते. अगर हम वही प्लांट्स की बात करें, they also breathe out oxygen and take in carbon dioxide. So plants also need air to live. So therefore, we need to plant more and more trees, right, around us so that we may get what? Fresh air. Now, properties of air. What are the different properties? First is air occupies space. The space all around us is filled with the air. Since air occupies space, it is used to fill things such as, क्या क्या चीजें fill करते हैं? Balloons, right? Take a balloon and blow it, then it become bigger. So what do you observe? कि air is filled up within the space inside the balloon. Air has weight. Air के अंदर weight होता है. Besides occupying space, air also has weight. Inflate two balloons of same size. Put them in a weighing scale. Notice that the weighing scale is balanced. आप notice करोगे कि जो weighing scale है वो balanced है. Now prick one of the balloon. आप क्या करो? एक balloon को फोड़ दो. See that the scale is tilted towards the balloon, that it is still below. So because the balloon with the air is heavier, तो ये क्या prove करता है? कि एयर में वेट है. देखो, इसको हमने इन्फ्लेट कर दिया तो ये नीचे की तरफ झुक गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एयर के अंदर भी वेट है. एयर हैज फोर्स. आप राइड करो साइकिल को along the direction of wind, you will find it is easy to ride the bicycle. So now ride the bicycle against the wind. You will find that it is harder to ride the cycle. This is because now the wind is blowing against you and now more energy is required to cycle against the, और आपको ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी. सो एयर एक्सर्ट प्रेशर. सिंस एयर हैज वेट, एयर के अंदर क्या है? वेट है. ये क्या करता है? प्रेशर भी एक्सर्ट करता है. टेक अ टम्बलर एंड फिल इट कंप्लीटली विद वाटर अप टू द ब्रिम. नाउ प्लेस अ थिन स्मूथ पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड with one hand and turn the tumbler upside down quickly. After a few minutes, remove your hand away from the cardboard. You will see that the cardboard does not fall down because जो air है from there blow exert pressure, that's what it's do. It support the cardboard in position. Air is necessary for burning. भाई air क्या है? बहुत जरूरी है burn करने के लिए. Air also help in burning. We cannot burn things without air. देखो, अगर एयर नहीं होगी तो आप चीजों को बर्न नहीं कर सकते. आप देखो, लाइट अ कैंडल, आप कैंडल जलाओ, उसके बाद कवर इट विद अ ग्लास जार, आप देखेंगे वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी. द कैंडल विल स्टॉप बर्निंग. दिस शोज दैट एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न थिंग. और ये क्या शो कर रहा है? कि एयर की नीड पड़ती है चीजों को बर्न करने के लिए. नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. ऑल ऑफ अस ब्रीथ एयर. हम सब एयर ब्रीथ करते हैं. द एयर वी ब्रीथ शुड बी क्लीन, बट एयर इज नॉट क्लीन एट ऑल प्लेसेस. इट इज बीइंग पॉल्यूटेड डे बाय डे due to number of reasons, and when air become unhealthy, dirty and unfit for us to breathe, we call it polluted air. Dust, smoke and germs make air polluted. Next is dust. When we sweep our homes or when the sweeper sweep the road, little particles of dust blow and mix with air. Therefore, dust in the air, what it's do? It's make the air polluted. Chimney from factories send smoke into the air. We have buses, cars and other vehicle also that gives out smoke into the air. The smoke make the air polluted. Such air is not good for our health. तो ये जो air है ये हमारी health के लिए अच्छी नहीं है. Next is germs. So when a person cough or sneeze, he or she leaves germs in the air. These germs mix in air. They can enter our body and makes us sick. So germs क्या होते हैं? बहुत ज्यादा harmful होते हैं हमारी body के लिए. And we should use handkerchief when we cough or sneeze. और हमें किसका यूज करना है? हैंकर. नेक्स्ट इज क्लीन एयर. वी नीड क्लीन एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्थी. तो एयर विदाउट डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स.
जो जिस एयर में ना तो डस्ट होगी, ना स्मोक होगी, ना जम्स होंगे, उसको हम क्लीन एयर कहते हैं. वी कैन गेट क्लीन एयर बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या है? पहले ट्रीज एंड प्लांट्स जो है दोनों क्या करते हैं? एयर को क्लीन रखते हैं, फ्रेश रखते हैं. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स. वी शुड ऑलवेज यूज हैंकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज. ये आपको किससे प्रिवेंट करता है? जम्स फ्रॉम मिक्सिंग इन द एयर. Smoke from vehicle and factories should be controlled, and we should always throw garbage in the covered dustbin. We should not spit in open place. थूकना भी नहीं है. We should not burn paper, wood, polythene bags and plastics, dry leaves and garbage. Right? ये भी आपको चीजें burn नहीं करनी है. ये भी हमारी एयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है. सो विदाउट एयर वी नॉट बी एबल टू हियर साउंड्स ऑल्सो. वही अगर एयर ही नहीं होगी, जो भी आसपास की साउंड्स है, जैसे मैं भी यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, तो आपको सुनाई नहीं देगा. Right? So this is all in this chapter. Now we will going to start with the exercise. Now first is tick the correct. The gas we breathe in is called, जो हम breathe करते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं. Blanket of air is called atmosphere. Air helps in eating, burning, sleeping, and none of these. Burning. Air has about 78% of nitrogen. We should not burn paper, plastic, polythene bags, all of these. All of these. Now, air is a mixture of many dash and particles. Many gases and particles. Dash is the most important gas for us. That is oxygen. Air exerts pressure. Plants breathe out oxygen and breathe in carbon dioxide. Dash and dash keep the air clean and fresh. Now write T for true and F for false statement. The air is colorless, order and shapeless. It's true. Now we cannot live without oxygen. It's true. Air has no weight. False. Air के अंदर weight होता है. Air helps in burning. It's true. We need clean air to keep ourselves healthy. It's true. भाई हमें कैसी air चाहिए? साफ सुथरी हवा चाहिए. Now match the following. The air is colorless, orderless, and shapeless. Air has about 70% of nitrogen. Plants need carbon dioxide for making food. Air is necessary for burning. Dust, smoke, and germs make air pollute. Next is define the terms. What is atmosphere? The blanket of air surrounding our earth is called atmosphere. Right? You can write yourself. I'm only explaining it. What is air pollution? The pollutants that are polluting our air is known as air pollution. For example, like smoke, burning of paper, these all come under air pollution. Now answer the following question. First is, what is air? Right, which is present everywhere. It is colorless, orderless, shapeless. Why do we need air? We need air to live, for breathing. Right, write 4 properties. Air has weight, air exerts pressure. Right, air is needed for burning. Which things can make the air polluted? Smoke, dust, dirt. Why should we grow more and more trees and plants? Because what it's do, it gives us clean air, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.